Hello there, everybody, and welcome to the extended version. Here we cover more examples compared to the recent YouTube short on the same topic. Speaking of rather simple on the surface, the versatile word has multiple uses, which makes it a bit slippery at times. Let's explore each use from simple to advanced, ending all the confusion. Starting with the most basic use, which is to state one's preference between two options. Here, I'd rather works as मैं पसंद करूँगा. Here we go. First example. मैं बाहर भीड़ में घूमने के बजाय घर पर आराम करना पसंद करूँगा. I'd rather chill at home than wander around in the crowd. Second, मैं घुमा फिरा कर बात करने के बजाय सीधा बोलना पसंद करूँगा. I'd rather tell him straight than beat around the bush. Third one, वो चाय के बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करेगी. सुबह चाय उसे सूट नहीं करती. She'd rather have coffee. Tea doesn't sit well with her early in the morning. Fourth, मैं बहस करने के बजाय चुप रहना पसंद करूँगा. I'd rather stay quiet than argue. मैं लेट आने के बजाय थोड़ा जल्दी पहुँचना पसंद करूँगा. I'd rather arrive a bit early than show up late. Then you have the second use where you have rather plus than that works as के बजाय. Here are some examples. वो शिकायत करने के बजाय solutions ढूंढना पसंद करता है. He focuses on finding solutions rather than complaining. And you can even invert the rather than structure as rather than complaining, he focuses on finding solutions. Then the second one, मैं traffic में फंसने के बजाय जल्दी निकल गया. Rather than getting stuck in traffic, I left early. वो लोगों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करती है. She tries to understand people rather than judging them. तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी औरों को ब्लेम करने के बजाय. You should have taken responsibility rather than blaming others. And the fifth one, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता हूँ. I want to do something productive rather than scroll through social media. Then coming to the third use, we have rather working as an intensifier, meaning quite or fairly, as in ज़्यादा और काफ़ी. Here are some examples. आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे मज़ा आया. Today's lecture was rather interesting. I really enjoyed. वो काफ़ी उदास लग रहा था, जैसे बात दिल पर ले ली हो. He seemed rather upset, as if he had taken it to heart. ये काम थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से करना पड़ेगा. This task is rather tricky. We'll have to handle it carefully. वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी, जैसे उसे सब पता हो. She seemed rather confident, as if she knew it all. ये जगह काफ़ी शांत है. काम करने के लिए परफेक्ट है. This place is rather quiet. Perfect for getting work done. Then we come to the fourth use where we have or rather, which works for correction or refinement and works as the word actually. Here we go, examples. वो एक टीचर तो है, पर एक्चुअली वो एक मेंटोर भी है. शी इज़ अ टीचर और रादर अ मेंटोर. मैं थक गई हूँ, सही कहूँ तो दिमाग भी थक गया है. आई एम टायर्ड और रादर मेंटली बर्नड आउट. वो बिज़ी नहीं है, एक्चुअली उसने अपनी प्रायोरिटीज़ गलत सेट कर रखी हैं. ही इज़न्ट बिज़ी और रादर ही हैज़ हिज प्रायोरिटीज़ मेस्ड अप. वो गुस्सा नहीं है, एक्चुअली थोड़ा हर्ट है. ही इज़न्ट एंग्री और रादर अ बिट हर्ट. ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, एक्चुअली काफ़ी सीरियस है. दिस इज़न्ट अ स्मॉल प्रॉब्लम और रादर क्वाइट सीरियस. Then we have rather working as unexpectedly or surprisingly when something exceeds expectations. Here too, it ends up meaning kafi. The way it differs, however, from the third use is that kafi is more relative here because expectations are involved. Let's see some examples to clarify. उसकी reputation के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा निकला. Considering his reputation, he turned out rather good. Notice the change in the tone too. सच कहूँ तो ये प्लान काफ़ी अच्छा काम कर गया. To be honest, this plan worked rather well. So you have that surprise element in the speech here. Third one, वो मीटिंग surprisingly काफ़ी productive थी, वरना टाइम ही वेस्ट होता है. That meeting was rather productive. Usually it ends up being a waste of time. Fourth, वो टेस्ट काफ़ी आसान निकला. जितना सोचा था उतना मुश्किल था नहीं. The test turned out rather easy, not as difficult as I'd expected. And then fifth one, उसका रिएक्शन काफ़ी शांत था. मुझे लगा था वो ओवर रिएक्ट करेगा. His reaction was rather calm. I thought he'd overreact. Finally, at number 6, my favorite use, one that the natives liberally resort to, where I'd rather means मुझे अच्छा लगेगा अगर और अच्छा रहेगा अगर. This is used to either express a gentle complaint or state a preference with emphasis or even render gentle advice.
Notice the past verb involved here because the use is for hypothetical scenarios, sentences. मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम टाइम पर आ जाओ. I'd rather you came on time. The subtle complaint. Second, काश वो बहाने बनाना बंद करे और अपनी गलती मान ले. I'd rather he stopped making excuses and owned up. यार कॉल उठा लिया करो, इग्नोर होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. I'd rather you picked up the call. It sucks to be ignored. Then you have, अच्छा रहेगा अगर तुम पहले बता दिया करो. I'd rather you told me in advance. And finally, अच्छा रहेगा अगर तुम बीच में interrupt ना करो. I'd rather you didn't interrupt. There we are, all the uses of rather. Cheers.